Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand Nursing File. Today in this video, we learn about here the nursing care plan on acute renal failure. This is very important. Nursing care plan for the examination purpose or for the practical file work and assignment purpose. तो आइए देखते हैं यहाँ पर acute renal failure का nursing care plan. यहाँ पर नर्सिंग प्लान से पहले हम एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं एक्यूट रीनल फेलियर यार आल्सो नोन एज द एक्यूट किडनी फेलियर और एक्यूट किडनी इंजरी मीन्स इसको हम एक्यूट किडनी इंजरी के नाम से भी जानते हैं। इज एब्रप्ट लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस मीन्स अचानक से किडनी के फंक्शंस खराब हो जाना एक्यूट रीनल फेलियर एक्यूट किडनी इंजरी के नाम से जाना जाता है। The glomerular filtration rate GFR falls over a period of hours to a few days, and if left untreated, acute renal failure may complicate to chronic renal failure. Next देखते हैं defining characteristics means the sign and symptoms of this disease. On the basis of these sign and symptoms we write here the nursing care plan. तो देखते हैं साइन सिम्टम ऑफ acute renal failure here decrease urine output although occasionally urine output remain normal, fluid retention causing swelling in your legs, ankle or feet, shortness of breath, fatigue, confusion, nausea, weakness, irregular heartbeat, chest pain, pressure, seizure और coma in severe cases। तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ acute renal failure का। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन एक्यूट रीनल फेलियर। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा डायग्नोसिस होगा एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। तो इसके देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट जिसके बेसिस पर हम डायग्नोसिस तैयार करते हैं। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा देन ऑब्जेक्टिव डाटा नर्सिंग डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन रेशनल और इवेल्यूशन हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे। सब्जेक्टिव डाटा में देखते हैं पेशेंट सेज दैट आई फील कंफ्यूज एंड इरिटेशन। देन ऑब्जेक्टिव डाटा में देखते हैं असेस वाइटल साइन, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, चेक वेट, असेस द स्किन फेस डिपेंडेंट एरिया ऑफ एडिमा। नेक्स्ट मॉनिटर लेबोरेटरी स्टडीज। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा ऑन the basis of these data we write here the nursing diagnosis that excess fluid volume may be related to compromised regulatory mechanism renal failure। गोल होगा यहाँ पर टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। इंटरवेंशन देखते हैं एक्यूरेट रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट रेशनल होगा decrease in output to less than 400 ml per 24 hours may indicate acute failure। Next second intervention here monitor urine specific gravity rational होगा specific gravity is usually equal to or less than 1.010 indicate loss of ability to concentrate the urine। नंबर थर्ड देखते हैं weight daily at same time of day or on same scale with same equipment and clothing। here rational होगा daily body weight is the best monitor of fluid status। a weight gain or of more than 0.5 kg per day suggests fluid retention। नंबर फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं assess skin face dependent area for edema। rational होगा edema occur primarily in dependent tissue of the body hands feet lumbosacral area। number fifth intervention monitor heart rate BP। here rational होगा tachycardia and hypertension can occur because of failure of the kidney to excrete urine। number six intervention auscultate lung and heart sound rational होगा fluid overload may lead to pulmonary edema and heart failure evidenced by development of adventitious breath sound extra heart sound। नंबर सेवन इंटरवेंशन होगा करेक्ट एनी रिवर्सिबल कॉज ऑफ acute renal failure रिप्लेस ब्लड लॉस मैक्सिमाइज कार्डियक आउटपुट डिसकंटिन्यू नेप्रोटॉक्सिक ड्रग्स रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन वाया सर्जरी। रेशनल होगा किडनी में बी एबल टू रिटर्न टू नॉर्मल फंक्शनिंग प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग रेजिडुअल इफेक्ट
नंबर 8 होगा मॉनिटर डायग्नोस्टिक स्टडी टू नो द रीनल फंक्शन. And number 9 intervention, administer medications as prescribed or indicated, example diuretics, antihypertensive. तो यहाँ पर इसका रेशन होगा एज फॉर थेरेप्यूटिक रेजिमिन. आफ्टर दीज इंटरवेंशंस हम यहाँ नर्सिंग केयर प्लान का एवेल्यूशन लिखते हैं. तो यहाँ देखते हैं एवेल्यूशन होगा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान के यहाँ पर मेंटेन्ड फ्लूइड बैलेंस. नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेकंड, diagnosis risk for imbalanced nutrition less than body requirement. Nursing assessment not applicable because this is the risk diagnosis and objective data. We observe where the and assess nutritional pattern, monitor weight, monitor laboratory studies. On the basis of these assessment, we write here the nursing diagnosis. And nursing diagnosis here, risk for imbalanced nutrition less than body requirement related to anorexia, nausea, vomiting, ulceration of the oral mucosa. गोल होगा टू डिक्रीज रिस्क फॉर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस. इंटरवेंशन और रेशनल देखते हैं. फर्स्ट असेस एंड डॉक्यूमेंट डाइटरी इनटेक. रेशनल होगा एड इन आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज एंड डाइटरी नीड. नंबर सेकंड इंटरवेंशन, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट स्मॉल फीडिंग. मिनिमाइज, रेशनल होगा मिनिमाइजेज ऑनोरेक्सिया एंड नोजिया associated with uremic state and or diminished peristalsis. Number third intervention होगा give patient and significant other a list of permitted food or fluids and encourage involvement in menu choices. Rational होगा provides patient with a measure of control within dietary restrictions. Food from may enhance appetite. Number fourth intervention, offer frequent mouth care or rinse with diluted acid solution. Here rational होगा mucous membrane may become dry and cracked. Mouth care soothe, lubricate and help freshen mouth taste. Number fifth intervention होगा give gum, hard candy, breath mint between meals. Here rational होगा help to change mouth taste. Number sixth intervention होगा wait daily. Here the fasting of catabolic patient normally losses 0.2 to 0.5 kilogram per day. Change in excess of 0.5 kilogram may reflect shift in fluid balance. Number 7, monitor laboratories studies blood urea nitrogen, albumin, transferrin, sodium and potassium. Rational होगा indicate some nutritional needs, restrictions and necessity for and effectiveness of therapy. Number 8 intervention होगा consult with dietitian support team. Here rational होगा determine individual calorie and nutrient need with the restrictions. Number 9 intervention होगा provide high calorie, low to moderate protein diet, include complex carbohydrate and fat source to meet caloric need and essential amino acid. यहाँ पर रेशनल होगा द अमाउंट ऑफ नीडेड एंड एक्सोजेनस प्रोटीन इज लेस देन नॉर्मल अनलेस patient is on dialysis. Carbohydrate meet energy need and limit tissue catabolism, preventing keto acid formation from protein fat oxidation. Next देखते हैं नंबर 10, maintain proper electrolyte balance by strictly monitor level. Here रेशनल होगा medications and decrease in GFR can cause electrolyte imbalance and may further cause renal injury. Number 11 intervention होगा restricts potassium, sodium and phosphorus intake as indicated. Rational होगा restrictions of these electrolyte may be needed to prevent further renal damage. Number 12 intervention, administer medications as indicated. Here iron preparation for the iron deficiency may occur if protein is restricted, patient is anemic or GI function is impaired. Vitamin D necessity to facilitate absorption of calcium from the GI tract. Next vitamin B complex and C vitamin, folic acid here vital as coenzyme in cell growth, and oxygen intake is decreased because of protein restrictions. Number 13 intervention, administer prochlorperazine, copazine, trimethophenamide, teican. Rational होगा यहाँ पर give to relieve nausea, vomiting and may enhance oral intake. आफ्टर दीज इंटरवेंशन हम केयर प्लान का एवेल्यूशन लिखेंगे. एवेल्यूशन होगा नाउ डिक्रीज द रिस्क फॉर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन. तो ये तो हमारा केयर प्लान नंबर
सेकंड नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड केयर प्लान। यार रिस्क फॉर इन्फेक्शन डायग्नोसिस होगा। असेसमेंट देखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। असेस वाइटल साइन, मॉनिटर डब्ल्यूबीसी काउंट, असेस स्किन इंटीग्रिटी। डायग्नोसिस देखते हैं। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिप्रेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिक डिफेंस सेकेंडरी टू यूरेमिया। गोल होगा टू डिक्रीज फॉर इन्फेक्शन। नर्सिंग इंटरवेंशन होगा और इसका रेशनल देखते हैं। फर्स्ट, प्रमोट गुड हैंड वॉशिंग बाय पेशेंट एंड स्टाफ। रेशनल होगा रिड्यूस रिस्क फॉर क्रॉस कंटामिनेशन। नंबर सेकंड, अवॉइड इन्वेसिव प्रोसीजर, instrumentation and manipulation of the indwelling catheter whenever possible. Use aseptic technique. Rational होगा limits introduction of bacteria into the body. Early detection of developing infection may prevent sepsis. Number third, intervention provide routine catheter care and promote meticulous perineal care. Rational होगा reduces bacterial colonization and risk of ascending UTI. Number fourth, intervention encourage deep breathing, coughing, frequent position changing. Here rational होगा prevent atelectasis and mobilizes secretions to reduce risk for pulmonary infection. नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन देखते हैं। असेस स्किन इंटीग्रिटी। रेशनल होगा यहाँ पर एक्सकोरिएशन फ्रॉम स्क्रैचिंग में बिकम सेकेंडरली इन्फेक्टेड। नंबर सिक्स इंटरवेंशन मॉनिटर वाइटल साइंस। रेशनल होगा फीवर हायर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट with increased pulse and respiration is typically of increased metabolic rate resulting from inflammatory process. Number 7, intervention monitor WBC count. Rational होगा although elevated WBC may indicate generalized infection. Number 8, obtain specimens for culture and sensitivity and administer appropriate antibiotic as indicated. Rational होगा verification of the infection and identification of specific organism aid in choice of the most effective treatment. After these interventions we write here the nursing evaluation. Evaluation होगा हमारा यहाँ पर decreased risk for infection. नेक्स्ट देखते हैं नंबर फोर्थ इंटरवेंशन। यहाँ फोर्थ इंटरवेंशन है रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। subjective data not applicable because this is the risk diagnosis. Objective data here assess vital sign, check weight, monitor intake and output, check skin integrity. Diagnosis देखते हैं risk for deficient fluid volume related to excessive loss of fluid diuretic phase of acute renal failure. The next goal होगा to decrease risk for deficient fluid volume. Nursing intervention rational देखते हैं. First intervention measure intake and output accurately, weight daily, calculate insensible fluid loss. Rational होगा assessment can help estimate fluid replacement need. Number second intervention provide allow fluid throughout 24-hour period. Rational होगा diuretic phase of acute renal failure may revert to oliguric phase if fluid intake is not maintained or nocturnal dehydration occur. Number third, monitor BP noting postural change and heart rate here. Orthostatic hypotension and tachycardia suggest hypovolemia. Number fourth intervention note sign and symptoms of dehydration, dry mucous membrane, thirst, dull sensorium, peripheral vasoconstrictions. Rational होगा in diuretic or post-obstructive phase of renal failure, urine output can exceed 3 liters per day. Number next intervention देखते हैं. Control environmental temperature, limit bed linen as indicated. Rational होगा may reduce diaphoresis which contribute to overall fluid losses. Number 6 intervention monitor laboratory studies here. Rational होगा in non-oliguric acute renal failure or in diuretic phase of acute renal failure. Large urine losses may result in sodium wasting, while elevated urine sodium acts osmotically to increase fluid losses. Restrictions of sodium may be indicated to break the cycle. After these interventions, we rated the evaluation of care plan number 4. Now, here evaluation is decreased risk for infection. नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन देखते हैं डेफिशिएंट नॉलेज. इसका यहाँ पर देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट. एयर सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट आस्क अबाउट द acute renal failure. Objective data here patient looking anxious.
Nursing diagnosis देखते हैं. On the basis of this data we write here the nursing diagnosis that the deficient knowledge may be related to lack of exposure, recall and information misinterpretations. गोल होगा to improve knowledge level. Nursing intervention rational देखते हैं. Intervention number first, review disease process, prognosis and precipitating factors if known. Rational हो गया. Provide knowledge base from which patient can make informed choice. Number second here, explain level of renal function after acute episode. Intervention का rational होगा. Patient may experience residual defect in kidney function which may or may not be permanent. Number third intervention होगा. Discuss renal dialysis or transplantation if these are likely options for further. Rational होगा. Although these options would have been previously presented by the physician, patient may now be at a point when options need to be considered and may desire additional input. Number fourth intervention, review dietary plan and restrictions include facts sheet listing four restrictions. यहाँ पर rational होगा. Adequate nutrition is necessary to promote tissue healing. Adherence to restrictions may present complications. Number fifth intervention, encourage patient to observe characteristics of urine and amount of frequency of output. Rational होगा. Changes may reflect alteration in renal function and need for dialysis. Number sixth intervention होगा. Establish regular schedule for weighing. ये rational होगा. Useful tool for monitoring fluid and dietary need. Number seven intervention, provide emotional support to the patient and family. ये rational होगा. To reassure them of all the procedure the patient may undergo. Number 8 intervention होगा. Review fluid restrictions, remind patient to spread fluid over entire day and to include all fluids. Ice in daily fluid count air. Rational होगा. Depending on the cause of stage of acute renal failure, patient may need to either restrict or increase intake of fluid. Number 9 intervention होगा. Discuss activity restrictions and gradual resumption of desired activity. Encourage use of energy saving, relaxation and diversional technique. Rational होगा. Patient with severe acute renal failure may need to restrict activity and or may feel weak for an extended period during lengthy recovery phase, requiring measures to conserve energy and reduce burden. Number 10 intervention होगा. Discuss reality of the continued presence of fatigue. Rational होगा यहाँ पर. Decrease metabolic energy production, presence of anemia and state of discomfort commonly result in fatigue. Number 11 intervention, determine activity of daily living and personal responsibility, identify available resources and support system. Rational होगा. Help patient manage lifestyle change and meet personal need. Number 12 intervention, recommended scheduling activity with adequate rest period. Irrational होगा. Prevent excessive fatigue and conserve energy for healing tissue regeneration. Number 13 intervention होगा. Review use of medications, encourage the patient to discuss all medications and herbal supplement with physician. Here rational होगा. Medications that are concentrated and in and or excreted by the kidney can cause toxic cumulative reactions and or permanent damage to the kidney. Some supplement may interact with prescribed medications and may electrolytes. Number 14 intervention होगा. Stress necessity of follow-up care, laboratory studies. Here rational होगा. Renal function may be slow to return following acute failure up to 12 months and deficit may persist and require change in the therapy to avoid recurrence. Number 15 intervention होगा. Identify symptoms requiring medical interventions, decrease urinary output, sudden weight gain, presence of edema, lethargy, bleeding sign of infection, altered mentation. Rational होगा यहाँ पर. 15 intervention का prompt evaluation and interventions may prevent serious complications or progression to chronic renal failure. After these interventions, we write here the evaluation, and now your evaluation is improved level of knowledge.
फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो नर्सिंग केयर प्लान और एक्यूट रीनल फेलियर। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस केयर प्लान विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एयर आनंद नर्सिंग फाइल। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।